Hello, in this video we will learn about the properties of rational number. But before we start, we must know some basic things and some terminologies. So let's start. First we will talk about mathematical operators. 8th in class 8th and till the 10th, mathematical operator means all the signs and all the operations that we operate. For example, addition, subtraction, multiplication, and last is division. All these four operations are called mathematical operators. Moreover, also there is term called operands. Okay, so operands are nothing, they are the objects, or here since we are talking about maths, so here these are numbers. Okay, so operands are the objects or numbers on which these mathematical operators are performed, like these on which mathematical operations are performed, like addition, subtraction and multiplications. So let's see with an example. Suppose we have 2 plus 5 is equal to 7. ठीक, यहाँ पे हमारे पास 2 plus 5 is equal to 7 है. तो 2 और जो 5 हैं इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स. These two are called ऑपरेंड्स. और जो ये हमने जो इसमें जो फंक्शन जो हमने परफॉर्म किया है, जो ऑपरेशन, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एडिशन यूज किया है. ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़. तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने से पहले हमें समझना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका मतलब क्या है. So first property of rational number that we will study about is closure property. So the word closure has come from the word close, which means same, or like of the same type, of the same type, very close to each other, very close. So this word closure property is derived from the word close. Now what this property says, तो closure property कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो numbers हैं, let's say A and B, and these numbers, the two numbers A and B, they belong to same kind of numbers, same type of numbers. For example, here let's say A and B are whole number. Okay, whole number. So if our A and B are whole number and we perform any mathematical operators, like if we add them, we subtract one from other, or we multiply, or we divide. So let's say if we are adding these two numbers, so we are adding two numbers of same family, and if the result that we get, if that also belongs to the same family, then the closure property will hold true for this type of family. Try to understand with an example, or let me explain it more. हमारे पास ये दो नंबर हैं A और B. ये दोनों नंबर कैसे हैं, होल नंबर हैं. ठीक, अब इन पे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कुछ भी करते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है अगर वो भी होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर होल नंबर. ओके, सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सो आई एम गिविंग एग्जांपल फॉर होल नंबर. फॉर होल नंबर I am giving some example. We will come to rational number after this example, after you understand it properly. So let's take any two whole number. So I am taking 7 and 9. Now I am performing the addition operation. So I added these two and I will get 16. 7 is whole number, 9 is whole number.
after performing addition we are getting 16. 16 is also a whole number. कहने का मतलब ये है कि हमने जो नंबर्स लिए थे उसके बाद उन पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो हमें रिजल्ट मिला वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये कैसे हैं, तीनों ही ये होल नंबर हैं. ठीक, तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट देंगे, इसके लिए हम बोलेंगे कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर addition. Okay, that means if we add any two whole number then the result will also be a whole number. अगर हम किसी भी दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा. Okay, so since we understood what is closure property, now let's apply it to rational number. closure property तो हमने अच्छे से देख ली है. अब हम देखते हैं कि इनको रैशनल नंबर्स पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है. ओके, सो हर बार हम अलग अलग ऑपरेटर लेंगे. लाइक एक बार एडिशन लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन. फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनके रिजल्ट्स देखेंगे. वी विल कंपेयर द रिजल्ट्स एंड इनपुट एंड देन वी विल देन डिसाइड वेदर दे आर क्लोज्ड और नॉट. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द एडिशन. ओके, I hope you know what is rational number. If you don't know what is rational number, then refer to my first video, okay, on the rational numbers. So if I take the example for addition, so let's take the example of 2 by 5 plus 2 by 3. So 2 by 5 is one rational number, 2 by 3 is another rational number, and the operator that we have used is addition. So when we will add this, we will get 16 by 15. 2 by 5 is a rational number, yes. 2 by 3 is a rational number, yes. 16 by 15 is also a rational number. Okay. Now let's see an second example for this. Minus 2 by 7 plus, here minus 2 by 7 is our rational number, plus 1. Okay, is 1 a rational number? Yes, it is, because we can write 1 by 1. Okay, so now minus 2 by 7 is a rational number, yes. 1 is a rational number. When we will add it, what we will get? We will get 5 by 7. Is 5 by 7 a rational number? Yes. So you try with different types of example. You change the numbers here and do the operation of addition, and if you still get the rational number as a result, then that means they are closed. And to make it clear, rational numbers under addition are closed. Okay, so I'm just writing they are closed. Yes, I'm just writing yes. अगर किसी भी दो रैशनल नंबर को आप जोड़ते हैं तो जो तीसरा रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. So we saw the addition operation under the closure property for rational number. Now let's change our operator. अब हम नए ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर पे आएंगे जो कि है हमारा सब्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द सब्ट्रैक्शन. लेट्स टेक टू रैशनल नंबर एंड आई एम टेकिंग 3 by 8. दिस इज वन रैशनल नंबर एंड अनदर इज 2 by 3. Operator is minus, and when you will perform this operation you will get minus 7 by 24. Okay, is 3 by 8 a rational number? Yes. 2 by 3 is also a rational number, and the result that we have got, that is minus 7 by 24, is also a rational number. You can take other examples to see whether the result is rational number or not. Each time you do that, you will get that the result is each and every time it's a rational number. किसी भी आप दो रैशनल नंबर्स को आप घटाइए, किसी भी तरीके से घटाइए, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रैशनल नंबर होगा. तो तीनों सेम ही टाइप ऑफ नंबर से बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर से, तो हम क्या कह सकते हैं कि दे आर क्लोज्ड. यस, इन दिस केस ऑल्सो द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड. थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. Okay, again we will take the example. It's very easy. You just take example, apply the operators and see what the result is coming. Okay, so यहाँ पे मैं कोई भी example लेता हूँ. Let's say I'm taking 7 by 8
this is my rational number first, and then second rational number I am taking 3 by 5, or let's say minus 3 by 5. Now if we will perform the multiplication, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -21 by 40. 7 by 8 रैशनल नंबर, -3 by 5 रैशनल, -21 by 40 भी एक रैशनल नंबर है. इसी तरह के कई ढेर सारे एग्जाम्पल ले लो. 2 by 3 मल्टीप्लाई बाई 1 by 3, रिजल्ट विल बी 2 by 9. दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो इज रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन? द आंसर इज yes. Division. Okay, so we will see few examples for this. Let's say that our example, I take 7 by 5, okay, divided by 3 by 2. If you'll solve this, I hope you know how to solve this, since okay, so when you will solve this you will get 14 by 15. You take different examples and you will find that each and every time the result is a rational number except one case, and that case I will explain later. So this is rational number, this is rational number, and the result is also rational number. But you need to be careful that in one case the result will not be a rational number. That is, suppose there is any rational number 8 by 3. Now if you will divide it by 0, okay, 0 is a rational number, yes, because you can write 0 upon 1. So if you divide the rational number 8 by 3 by another rational number 0, the answer would be undefined. Undefined means this, whatsoever be the answer be, that will not belong to the rational number. So what we conclude, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आप उसको 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं तब तक तो ये प्रॉपर्टी सही, मतलब क्लोज होगा डिवीजन के अंदर. बट जैसे ही आपने इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनडिफाइंड. ठीक, अनडिफाइंड यानी इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इट्स इन मैथमेटिकल लैंग्वेज. ओके, सो इस केस में, इस एक केस की वजह से जो होता है, हमारा रैशनल नंबर क्लोज नहीं होता है अंडर डिवीजन. सो वी सॉ what is the closure property for the rational number.